जय माता दी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड ब्लिसफुल नवरात्रि। और हम हैं बिल्कुल तैयार with your tarot predictions for the month of November 2020. Well, I've got the Zen cards जो हमें एक direction देते हैं, एक guiding light देते हैं, and एक prediction भी है उनके पीछे, उन guiding light के पीछे. But basically they give you the direction, they show you कि आपकी present condition क्या है, आपका past कैसा रहा, और आने वाले future को better करने के लिए आपको कौन सा path अपनाना चाहिए. फिर हमारे पास आज nature cards हैं, because you know, at this point of time, I believe that universe, cosmos, wishes to talk to every individual one-on-one. So I've got my nature cards here with me, and one more pack I have, जो हम हमेशा open करते हैं predictions के लिए. So let's start in all the good spirits, और हम thank you भी कहना चाहेंगे उन सारे लोगों को जिन्होंने on messenger or mails, you told me how the guiding light helped you, and how you look forward, and this is the faith, this is the mutual faith, the faith. See, between you and your faith there is no one. I am just a medium, and thank you so much, and I want all blessedness and all blissfulness in your lives. Okay, so I'm just shuffling the cards. I'll just shuffle all the 3 packs. Yeah. Okay. And these cards, ये जो cards हैं, ये आपको संकेत देंगे, संकेत कि हमारा लाइफ में जो डायरेक्शन है, हम जिस राह पर चल रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए, या हमें किस राह पर चलना चाहिए, right? So that's one pack. Now this is the pack जिससे हम आपके predictions करते हैं. Alright, this is the second pack. And now the special nature cards. Right, I've got the third pack with me. These are the beautiful nature cards, right? It's like the 5 elements, you know, earth, fire, water, sky, earth, air, you know, they speak to us. The big cards, as if, जैसे ये हमें बताते हैं, you know, you just, even if man tries, you know, you just cannot hold these 5 elements in your hands, even if they are in the form of cards. That's the power they carry. All right, so I'm just shuffling them all in the name of Almighty. I'll give one light shuffle. Okay. Okay. और बहुत सारे लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि हम हिंदी में भी बोलेंगे, तो हिंदी में भी बोलेंगे, राइट, बाइलिंगुअल रखेंगे हम अपनी भाषा को. तो आज हमारे पास 3 पैक ऑफ कार्ड्स हैं. ये स्पेशल रीडिंग्स हैं, स्पेशल जनरल रीडिंग्स हैं, because I have explored on some special reads, some special spreads, you know. Sometimes you fan a card, and sometimes you pick the card, so it's up to you. So let's begin. Okay, the very first 3 cards, that's for the dear Aries. I've taken out 1 card for you. There's a second card and 1 card for you. Dear Aries, are you ready? Well, these are the 3 cards for you. Well, your first card tells you that you don't have to take burden. कोई burden है जो आप अपने सर पर ले रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पर सवार है, you know, the person is very dominating, या अपने काम का प्रेशर ले रखा है, या बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी और you know, स्ट्रेस को आप फेस कर रहे हैं. So the card is just suggesting you, because it's a guiding light, so it's just suggesting you do not take that burden. You can just see the card, right? कोई है जो आपके शोल्डर पे बैठा है, मतलब आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, तो which is not right, which is adding lot of depression, which is adding lot of rather I would say stress and anxiety, which automatically you know, saddens you.
So you just have to cast away this burden. That's one. Now, as far as your November month predicts, there is something good which is about to happen. There is a message of love which is coming, and it would be a healing message. आप जो परेशान है, एक चैलेंजिंग टाइम है थोड़ा सा। अगर हम ऐसे देखें तो जब भी फेस्टिवल टाइम आता है तो कुछ प्रेशर्स होते हैं हमारे, है ना। और वैसे भी अभी वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, यू नो, अपने हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैवल उतना ईजी नहीं है। तो इस समय जो आपको कुछ लव मैसेजेस मिलेंगे, लव इन फॉर्म ऑफ यू नो गुड न्यूज़, एनीथिंग विच मेक्स योर हार्ट यू नो जस्ट हैप्पी, यू नो। सो ये आपको एक हीलिंग एनर्जी लेकर आ रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम प्रेडिक्टिंग. देयर इज अ स्पीडी न्यूज, देयर इज अ स्पीडी सिचुएशन दैट इज कमिंग योर वे, एंड देयर आर एरोज ऑफ लव टू. एंड नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट योर nature cards say. Wow, just see, the love here is blooming here. You know, it is the four of a spring, the four of a spring that you have, you know, आपका four of a spring आया है. और ये कार्ड हमें हमेशा बताता है कि because nature is blessing you, तो शुक्राना अदा करना आप मत भूलिए. Be grateful because you have so much to celebrate, right? You have deep feelings of happiness, you know, peace you have within. एक contented personal life है, ठीक है? और ये बहुत बड़ी blessing है. And I think the Diwali spirit, you know, everything, it's going to be just wonderful. So good health, everything. And I think that the emotional aspect, it will be dominating, or it would be ruling your month of November. Well, moving on to the next sun sign, and that is dear Taurians. Let's check out what your cards say. Okay, I'll just shuffle the cards for you, dear Taurians. Right, dear Taurians. And I'll take out one card for you, dear Taurians. That's here. One card here. Okay. And I'll shuffle this back too. Okay. Oh wow, it came on your own. It came on its own, yeah. Okay, so see dear Taurans, the first card जो direction आपको, जो current situation बता रहा है, या जो एक नवंबर में जो एक situation आपको दिखा रहा है, that is a fighting. You are fighting with something. और ये लड़ाई बाहरी लड़ाई नहीं है, ये आपके अंदर की लड़ाई है. आप क्यों परेशान हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे को तो ऐसी कोई वजह नहीं दिखती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत है. एक अंदर से सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? सो यू हैव टू गिव अप दिस फाइटिंग, राइट? In any way. और ये कार्ड आपको ये भी बताता है if somebody is provoking you for some kind of fight, अगर कोई इंसान आपको provoke कर रहा है तो आप उसको बहुत ही mature तरीके में डील करिए, because it's not worth it, right? It's not worth it. So this is just guiding you that do not pick up the fights and resolve the self conflict. अगर हम आपके prediction की बात करते हैं कि how is going to be your month of November, then you are queen of emotions. अब सवाल ये आता है कि if you are male, then this card means again that the feminine part, you know, the emotional part of your being, that is going to be really beautiful. As a man, you will have better understanding for women, whether daughter or anybody that weighs, your mother, your colleague, your friend, your wife, anybody for that matter, you know. So queen of emotions, it's emotions are brimming, you know. तो एक नवंबर का अगर हम मंथ देखें तो अगर आप अपने, एक तो आप सक्सेसफुल होंगे और ये सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट आप अपना हटा पाएंगे अगर आप अपने कंपैशन एंड इमोशंस की हीलिंग एनर्जी को खुद ही, लाइक आपको खुद का डॉक्टर बनना पड़ेगा, राइट? इट्स लाइक दैट. एंड जस्ट सी, इट्स द लवर्स कार्ड. नाउ दिस इज द टाइम डियर टॉरियंस दैट यू विल रियलाइज एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रू लव. एक्चुअली इंसान की ज़िंदगी में एक ही बड़ा क्या बोलेंगे हम इसको, it's a kind of a puzzle that remains unsolved for a long period of time.
हम 16 इयर्स के होते हैं, हमें लगता है यू लव समबडी, हम और बड़े होते हैं, हमें लगता है अच्छा दिस इज़ लव, कोई हमें गिफ्ट देते हैं अरे दिस इज़ लव, है ना, हम रो रहे हैं कोई अपना कंधा देता है हमें लगता है दिस इज़ लव, बट देन एज यू ग्रो एज यू ग्रो एज यू ग्रो यू बिकम मोर लिबरेटेड फ्रॉम इनसाइड एंड यू रियलाइज व्हाट लव इज़। शायद कोई शायद आपको ये लगे कि अरे ये सितारों पे तो मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, ये तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, राइट। सो दैट काइंड ऑफ ट्रू लव दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज़ एंटरिंग योर लाइफ, यू विल बी मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट। एंड अभी अगर आप देखें टॉरेंस, तो एक थोड़ा सा आपने हेल्थ इशू सफ़र किया थोड़ा सा, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, मेंटल लेवल पर हो, स्ट्रेस हो, बहुत परेशानी का आपने सामना किया हो, या सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट में आप बहुत उलझे हुए हो, बट you are returning to good health. So all the very best to you, and the Diwali light, it's going to bring you the light of true love. All the very best, dear Taurians. Now, let me just check out what the next sun sign says, and that's the dear Geminis. So I'll just shuffle first pack for you, dear Geminis. Let's check out what your cards say. Now, November in itself, you know, it's a beautiful month. It's a beautiful month, but November also it predicts that some phases, कुछ ऐसे phases हैं हमारी ज़िंदगी के जिन्हें अगर हम clarity के साथ close नहीं करेंगे तो nature उन्हें ज़रूर close करेगा। और destiny is supreme, nature is supreme, man is पावरफुल, ऑफ कोर्स मैन को इस यूनिवर्स ने बहुत सारे पावर्स दिए हैं, लेकिन जब भी इंसान ने अपने पावर्स को मिसयूज़ किया है, नेचर ने ये भी प्रूव किया है कि मैन इज़ द मोस्ट पावरलेस being on this earth. Anyways, Geminis, I'll take out one card as for your guidance. I'll take out one more card as your prediction, and let's check out what your nature card tells you and it predicts for you. See, dear Geminis, you need to listen to your inner voice, right? अपने अंदर की आवाज़, हर पर्सन के पास अपने अंदर की आवाज़ होती है, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। यू नो, यू फोर्स द चाइल्ड फॉर समथिंग वो नहीं करना चाहता, तो दैट इज़ हिज इनर वॉइस, ही डजंट वांट टू डू, ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, वो बता नहीं पा रहा है कोई चीज़। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट एवरी बीइंग हैज़, यू नो, इट्स ओन इनर वॉइस। तो उस इनर वॉइस को आपको अपना गाइडिंग लाइट समझना है, ऐसा कार्ड्स प्रेडिक्ट करते हैं। जेमिनाइज, देखिए कभी कभी हमको लगता है कि हम शॉर्टकट से अपनी चीज़ों को पा लेंगे, लेकिन आपका नवंबर का मंथ ये बता रहा है कि बहुत आप ऑनेस्टी के साथ अपना काम करिए, आप अपने जो बॉन्ड्स है बहुत क्लोज, उनसे आप झूठ मत बोलिए, फेक मत बिहेव करिए, बिकॉज सम वे यू नो यू एक्चुअली बिहेव एज पर द सिचुएशंस, राइट, दैट्स हाउ योर सन साइन गोज, यू नो। तो वो एक है, वो एक नेचुरल चीज़ है, इंस्टिंक्टिव है आपके अंदर, बट स्टिल द कार्ड्स आर सजेस्टिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर अगर आप क्लैरिटी रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वो बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट की। हो सकता है आप कुछ ऐसा फेक करें एंड यू आर कॉट, सो दैट वुड बी वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग। सो द कार्ड्स आई सजेस्ट दैट यू नो डोंट बी फेक, just try to be genuine and one face, and then it's a beautiful prediction for you, because embrace your true purpose. Do what you want to do. You want to write, you want to paint, you paint, you want to sing. So let your inner voice guide you, and एक new adventure आपकी ज़िंदगी में नवंबर begin कर रहा है, and इसके लिए आपको कोई doubts नहीं रखने हैं और आपको अपने आप को trust करना है। So all the very best, dear Geminis. Moving on to the next sun sign, and that is dear Cancerians. Let's check out what your cards say, dear Cancerians. My wonderful friends, dear Cancerians. Okay. Cancerians, you're very nice people, right? You're very nice. You're soft, you have your compassionate side, but अगर आप अपने आप को देखिए तो आप
इस पे अपने ट्रू सेल्फ को दिखाने से ज़्यादा इस पे बिलीव करते हैं कि जैसा माहौल है हम उसमें अपने आप को वैसा पोर्ट्रे करें, और ऐसा करने के चक्कर में आप अपने ट्रू सेल्फ से दूर हो जाते हैं, ठीक है। सो आई वुड जस्ट it's just the guiding light, you know, that try to be yourself, you know. Why to stop yourself, you know, from being true, you know? So because more you will work on this, more strong you will be from inside, right? More strong you will be from inside. So dear Cancerians, I'll take out your predictions. Dear Cancerians, see what I said. This is just it's a coincidence, you can say, or it's just, you know, making it more strong. What I said, through this card it comes as stronger. Exhaustion. बहुत आपने अपने आप को थका लिया है, और ये थकान है किसी चीज़ को प्रूव करने की, अपने आप को प्रूव करने की, एक जो अंदर से बेवजह एक जो मेहनत हो रही है, वो इट इज़ डिप्लीटिंग योर एनर्जी, द पॉजिटिव एनर्जी। कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव फेज में ले जा रही है, राइट? आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हैपनिंग, बट इट्स हैपनिंग। सो द कार्ड्स आर जस्ट स्टॉपिंग यू बिकॉज दे लव यू, दे वांट यू टू प्रिजर्व योर पॉजिटिव एनर्जी, है ना। और पॉजिटिव फोर्सेस, पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाह रही है, और वो आप अपने एक झूठ की वजह से या अपने you're running away from yourself. That's what the cards are saying. It's just like you want to do something, you want to trust somebody, you want to, and you're just stopping, and that is leading you to an utter exhaustion. Now just look at this, just look at this card. If you give up on that, if you leave that, you're going to emerge as an empress, you know. Your work is going to be recognized. You are going to shine, provided you stop doing things to prove yourself. You need not prove yourself to anyone. Do what you are comfortable with, right? What you're comfortable in doing. And this one card, it tells you, just look at this. I'm so happy. All the feminine energy. Queen of Spring. You're brilliant. You're loyal. You're talented. You're friendly. So just need to believe in yourself. And it's written here. Wonderful people. God has sent wonderful people to your life, you know, to help you, right? So you need to maintain that balance. Okay, you need to maintain that balance. And just because all these cards, these did I take, yeah, all these three cards, इसमें feminine energy बहुत ही strong दोनों cards में दिख रही है. तो if you're a male, obviously that means आपके अंदर का जो feminine part है, emotions हैं, या जो आपके life में lady luck है, lady love है, you know, that is going to be a very very strong support. जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ये हमारा स्ट्रेंथ भी बताते हैं. जब भी ऐसे कार्ड्स आते हैं ये हमारी प्रॉस्पेरिटी बताते हैं, प्रोडक्टिविटी बताते हैं, हमारा वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा. लेकिन there is always, see what we sow we have to reap it one day, right? ये हमारी ब्लेसिंग है, ठीक है. ये हमारी ब्लेसिंग है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो they have accepted you the way you are. They're not judgmental about you. They've just accepted you the way you are. So I think if you just give up on this competition within you, it's going to be a great month and great Diwali and great time for you because you're just brilliant. So if I just say it for men and women both, it's a time for productivity. It's time for, you know, for reaping a wonderful harvest and all the good times, Diwali sweets. So moving on to the next sun sign, and that is dear Leos. And let's check out what your card says, dear Leos. Let me shuffle the cards for you, dear Leos. Yeah. So, Leos. So everybody who has just joined in, these are the tarot predictions for the month of November 2020. Yeah.
All right. So one card, and these are, though these are the general predictions, but let me tell you, at times they resonate so strongly with you because, okay, one card for you, dear Leos. Wow. I was expecting that card for you. Oh, lovely. Lovely. I didn't shuffle this right. How is life? I'm sure all is well at your end. Always stay positive. Think good for others, and automatically all your problems would heal. Right? Okay. Oh, wow. I'm just so happy with your cards, dear Leos. Oh, wow. It's like you are in love with nature, or I should say it this way, that nature is in love with you. एक strength, एक energy, जिस energy से आप दूसरों को heal कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया cards. You know, nature is going to be, you know, spend time with plants, spend time with flowers, spend time with trees, right? Beautiful card, right? Nature is blessing you. There is some good news which is coming your way. Some healing good news is coming your way. So that's really, और ये समय है जब आप realize कर रहे हैं कि materialism, you know, जिसके पीछे हमने हमेशा बहुत सोचा, बहुत calculations किए, एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट नहीं है लाइफ में. लाइफ का जो पीस है वो इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है. एंड देन यू हैव ड्रॉन टू अ विंटर विच इज़ एक्चुअली कोई एक ऐसा डिसीजन है विच इज़ होल्डिंग यू बैक. कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है ना. तो you can make the choices. So make choices that's best for you. Don't try to please others. Say the things that you want to do, right? Feeling, kabhi क्या होता है ना, you are feeling trapped between the intellectual and the emotional, because that's what the card is saying, है ना. कभी हम caught हो जाते हैं कि ये हम दिमाग से करें कि दिल से करें. मेरा ये मानना है आप वो करिए जो आपका कॉन्शियस कहता है, क्योंकि कॉन्शियस हमें हमेशा राइट एडवाइस ही देता है, राइट. सो दैट इज़ इट. और एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर आपको कभी भी ये जानना है कि कौन पर्सन आपके लिए नेगेटिव है, तो एक उसका बहुत ही सिंपल सा मंत्र है जो हमने लाइफ में डिस्कवर किया. जो लोग नेगेटिव होते हैं, है ना, उनका पहला एफर्ट ये होता है कि आप पॉजिटिविटी से दूर हो जाएं. तो अगर आपने ऐसा महसूस कर लिया है, so just be silent and take your decision. I believe Diwali is going to bring you a lot of good decisions, a lot of happiness and a lot of love. Moving on to the next sun sign, and that is dear Virgos, right? All right, dear Virgos, let's check out what your cards say for the month of November 2020. Well, of course, I will be uploading these predictions, and today is 21st of October, and it's Wednesday today. I'm reading the cards, right? Some cards, they've fallen. Yeah, just picked up my cards. Oh, wow, the earth element. They've touched the earth. We consider it as something very fortunate, very lucky, yeah? When cards, they just fall on their own. Okay. Dear Virgos, right? I've already... this one. Virgos. All right, dear Virgos. Okay, dear Virgos. This is one card for you. Send a card for you. Dear Virgos, wow. Virgos, why are you tired, right? Just look. Why you're exhausted.
है ना। तो दिस कार्ड इज एक्चुअली टेलिंग यू कि अभी से ही आप स्ट्रेस लेना किसी भी चीज़ का बंद करिए और यू नो जस्ट बिल्ड अप दैट नवरात्र स्पिरिट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, यू नो दशहरा स्पिरिट इज देयर एंड देन कमिंग दिवाली, सो जस्ट डोंट बी एग्जॉस्टेड। बहुत सारा काम अपने सर पर क्या ले लिया है, या बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या जॉब का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी एक ऐसी चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप चिंता करोगे तो यू आर एक्चुअली आप अपनी तबीयत को ख़राब कर रहे हैं, राइट। तो एग्जॉशन नहीं लेना है क्योंकि इससे मेंटल हेल्थ आपका अफेक्ट हो रहा है। ये कार्ड का सजेशन है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा आपको एक पीस एंड हार्मनी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। कुछ ऐसी रियलिटीज़ आपके सामने आएंगी इन द मंथ ऑफ नवंबर, ऑफ कोर्स एज द कार्ड्स आर प्रेडिक्टिंग दैट आपको आंखों से रियलिटी दिखेगा, राइट, यू नो, एंड आपका वो ब्लाइंडफोल्ड जो आपने बांधा हुआ है वो निकलेगा। आप कुछ सिचुएशंस को असेस कर सकते हैं, राइट। आप अपने दिल को जो आपने एक फ्रोज़न करके रख रखा था, यू विल लेट इट लूज, राइट, क्योंकि अब आपके सामने रियलिटी है। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप उसी पर चल रहे थे, लेकिन आपको पता चलेगा कि जो आपसे बोला गया वो झूठ था, राइट। एंड तो आपके अंदर एक गिल्ट भी होगा कि अरे ये ऐसा मैंने कैसे कर दिया, बट नो वरीज, वो सिचुएशन का कॉल था, ये सिचुएशन का कॉल है, तो you be guilt free. And just see the princess of spring, the princess of spring. I'm so happy. I read for Aries, I read for Taurus, I read for Geminis, Cancerians, Leos, and now I'm doing the Virgo reading. हर कार्ड में एक फेमिनिन एनर्जी, जस्ट सी, आई हैड नॉट डिसाइडेड कि टुडे आई विल बी यू नो रीडिंग द नेचर कार्ड्स, लेकिन ये जो फेमिनिन एनर्जी, ये दो earthly energy है, the energy of the air, you know, the flowers, the flora, the fauna, I mean, that is dominating, you know. So somewhere the nature is trying to talk to you, be good, be good, be good to nature, right? You're optimistic, you're enthusiastic, you're energetic, you're creative. So it's just the time to go after your dreams, dear Virgos, and do something that expands your horizons. आप अपनी creativity को flight दीजिए, और ये सब possible है. November is bringing you lot of good things, लेकिन इस चैलेंज को आपको फेस करना है, एग्जॉशन नहीं रखना है, आपको अपने दिल को ऐसा बंधा हुआ गुस्से में नहीं रखना है, ब्लाइंडफोल्ड्स तो हटेंगे, गिल्ट नहीं रखना है. It's going to be a great, great time, dear Virgo. So all the very best. Moving on to the next sign, and I'll be shuffling the cards. All right. Librans. Dear Librans. Let's check out what your card says, dear Librans. The scales, right? The balance. The balance, yes. One more shuffle with these cards. The nature. So let's look at one card here. Librans. Cards. All right, let's see what's the guidance you feel so excited about. Oh God, I think that everywhere the human concerns are the same. हम सब अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट में फाइट कर रहे हैं अपने आप से. वो हमें बहुत, और सारी साइंस में यही हमें एडवाइस मिल रहा है, कॉस्मिक एडवाइस मिल रहा है, ये डिवाइन लाइट एडवाइस मिल रहा है कि अंदर से हमारे सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करें. हम अपने अंदर से झगड़ा नहीं करें. जो हमारा सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम रोकें. राइट? वाई टू फाइट? वाई? ये वो वक्त है, प्रकृति ने हमें ये वो वक्त दिया है जब कोई ग्रे शेड्स हमें नहीं दिख रहे हैं, या तो ब्लैक है या वाइट है, और ये इतना क्लियर है कि ये हमें डिसीजन लेना है, हमें अच्छा होना है या बुरा होना है. हम बहुत ब्लेसिंग है कि हमें प्रकृति एक ये चांस दे रही है, हमें इस चांस को गंवाना नहीं चाहिए. ये एक फ्रेंडली एडवाइस भी है और एक ये इंट्यूटिव एडवाइस भी है. प्रेडिक्शन. वाओ डियर लिब्रन्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. कोई पुराना दोस्त है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं. यू नो,
कुछ बचपना जो हमारा होता है वो उम्र से नहीं होता, राइट। कभी कभी एक बड़ी उम्र में भी हमारी बच्चों वाली दोस्ती होती है, राइट। तो वो एक दोस्ती, वो एक चार्म है, वो एक इनोसेंस है, वो एक प्योरिटी है जो आपकी लाइफ में, इट इज़ कमिंग बैक। वेलकम इट विद ओपन आर्म्स एंड गिव इट अ बिग हग। सो आई थिंक दैट इज़ द दिवाली गिफ्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। और आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्टिस। इसे हम कहते हैं डिवाइन जस्टिस, है ना। एंड टेक द टाइम टू रिव्यू द डिटेल्स केयरफुली, यू नो, यू विल विन, you are winning, right? And you are very fair, you're very objective in your decisions, and divine justice is going to happen. So, you know, this is a blessing, the Diwali gift for you that is coming. Thank you, dear Librans, and have a great time. Moving on to the next sun sign, and that is, dear Scorps. Let's check out what your cards say, dear Scorps. I'll just shuffle the cards for you, dear Scorps. Yes. Scorpions. Scorpions are very, very loyal people. They are so loyal that when they really love and trust somebody and they take a bond and very special a spirit, you know, for the best of that person, they'll keep the entire, you know, the entire negativity, you know, within themselves. They can take it just simply to, you know, protect people whom they really hold in high regards, good esteem, and lot of, what do you say, unconditional spirit of affection and love and care. So that's it. Yeah, that's a great, great trait of Scorpions. It's the ones who understand them are the best. I mean, they're the best friends. And the ones who do not understand them, trust me, Scorpion will say, you're not worth it. That's how they are, right? Okay, dear Scorps, let's check out what your cards say, dear Scorpions. Yeah. So one card for you, dear Scorpion. Let's check out what nature speaks to you. Oops, there's one for you. Wow, it's another one. Now, it's one card you have drawn, the Scorpions, the dream. Somebody is dreaming about you, and you were dreaming about someone. It could be a project, a person, a very small, a very, what do you call, a very divine kind of accomplishment, okay? Something which is ethereal, something that is unearthly, that is something which is beyond the understanding of people, you know. So the cosmic powers, the cosmic energies, that is showing you the light, right? When we see this card, it's about the dream, right? It's about your dream love. Now, that dream love could be a person, that dream love could be a project. And the beauty of the card is like, जितना कभी कभी हमें लगता है हम कोशिश कर रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, कभी कभी मंजिल भी उतनी कोशिश कर रही होती है आप तक पहुंचने के लिए. तो आपका हार्ड वर्क, आपका डेडिकेशन, that is definitely nature has kept a record of it. Then the Fool card, you've always been innocent, right? And ignorance is a bliss, ये भी सच है ना? और ignorance is a bliss, और ये bliss इसलिए भी है कि इंसान आपको भले ही फूल कर ले, लेकिन nature will always protect you. So you will get good friends, you'll have all the happiness, you know, you are taking a giant leap forward. And then you have drawn the Star card, which is number 17, the major arcana card here in this deck of nature cards, and which makes number 8. Number 8 is of eternity. There's hope, there's optimism, because you've given love. So it's a time that, you know, nature is responding to you that ways. You know, you have the faith, you know. So wonderful times are there, and the law of nature is same for everyone. What all we have given, it comes back, right? आपको एक छोटी सी चीज़ बताएं. Let's say एक इंसान है ना, और वो
हर को उसके पास गार्डन है फूलों का, तो वो हर को एक फूल देता है, ठीक है, लेकिन लोग फूल लेके चले जाते हैं, उसको आज तक ज़िंदगी में किसी ने फूल नहीं दिया, ठीक है, लेकिन वो हमेशा बहुत खुश रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसको खुदा ने गार्डन ऑफ रोजेस दिया है। तो जिसे खुदा ने दिया वो इंसान से क्यों उम्मीद करेगा, राइट? हम जब किसी को थैंक यू बोलते हैं वो हमारी गुडनेस होती है, अगर हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते हैं वो हमारी सेल्फिशनेस होती है, और हमें उन दोनों के बेसिस पे हमारा रिवॉर्ड मिलता है। गॉड का रिवॉर्ड, गॉड का जो पनिशमेंट भी होता है वो भी रिवॉर्ड होता है, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। सीखने वाले सीख लेते हैं, नहीं सीखने वाले अपनी डेस्टिनी को खुद कार्व करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, लेट्स चेक आउट what your card says, dear Saggies, right? The Scorpions, now the Sagittarius. Sagittarius. Let's check out what your card says, dear Saggies. All right, one card. Oh, it just happened. I took the first card for you. Okay, this one is here. I'll shuffle the nature cards for you, dear Saggies. All right. One card for you, dear Saggies. Okay. Wow. All right. Directions first. Celebrate. Celebrate life. Be happy. Why are you sad? Why are you sad? Smiles are precious. Happiness is precious. Live for the people who love you. Live for the people who understand you. Okay? Your mission of life is really big, right? Many a times we just fail on, or we just forget to realize our real purpose. So you will be, the light will dawn on you when you will realize the real purpose of life. And you will realize that the real purpose of life, it's all about being happy. Just be happy and bounce back to your real self. Because that's what the card of celebration is telling you. Bounce back to your real self, what you used to be years back. That real self which is lost somewhere, or which कहीं जो खो रहा है उसको आप वापस लाएं और ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें, dear Saggies. Your next card, it says Page of Pentacles. You are very responsible, I think, as far as, because this card shows money, this card shows professional life as well. There are challenges, there is a stress, there's एकदम से मनी का नीड, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो which is actually the financial aspect, that's what the cards are saying. But I think you will be able to manage. There is an inflow of money, there's an inflow of your support, I can say. So very beautiful cards, So really wonderful. And somebody, maybe some colleague of yours or somebody जो आपसे एज में छोटे हैं, वो आपकी मदद करेंगे, maybe giving you some idea, maybe giving you, some kind of, and it will have a very different energy because it will be very selflessly done for you. You are a selfless soul, okay? You're a selfless soul. That's what the cards say. And that is why the nature is telling you, see this card, it is actually the nature is telling you that you're my child. So the water is there, one element, the air is there, the second element, the leaves are falling, the sky is there, the third element, right? And the fire to be good, that is already within, right? And then the feminine energy. The feminine energy here means the compassion, the celebration, no cunningness, no shrewdness, Sometimes like for example, sometimes it happens, let's say I'm a female, but I may have a lot of shrewdness in me. And maybe there's somebody who is a man and, he's got a lot of compassion. So, that feminine energy I'm talking about. So it's vice versa, whosoever is listening at this point of time. Then you've got drawn the Six of Winter. Very positive changes are there on a way. There is a welcoming relief from
long troubled times. That's what the cards are saying. There is relocation, which the cards are suggesting. There's traveling, because there's a beautiful boat. It's decked up with all the beauty, and you're moving towards the calmer waters. So I see good health bouncing back, but the suggestion of the cards is that don't lose on your real self, right? Just be yourself. Let that charm be back. That's what the cards are saying, dear Saggies, right? So if you're a male, obviously your feminine compassion, you know, it will bounce back. If you are a female, obviously you will be more loving, more compassionate, and more caring, right? That's beautiful. Now moving on to the next sun sign, and that is dear Capricorns. Let's check out what your sun sign says, dear Capricorns. What your tarot say for you, dear Capricorns? Okay. All right, Capricorns. What's the time? Just wait. I thought it's 6:10 in the evening. All right, dear Capricorns, my wonderful, wonderful people. Capricorns, oh wow, I'm so happy to see the sky. When a lover's card, you just feel so happy, because lovers means like you're happy. You know, your soul is in love with your heart is in love with your mind. There's an absolute sync, you know. The second card, wow, Queen of Emotions, and then the transformation. This is one, एक चीज़ Capricorns में हमने हमेशा देखी है, इतना strong transformative एक phase आता है आपकी life में, और आप उसको बहुत ही शिद्दत के साथ आप उस चेंज को एक ट्रांसफॉर्मेशन में बदल कर, आप अगर आप ये सोच ले कि आपको गुस्सा नहीं करना है, तो आप सच में 48 घंटे आप गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आप सोच ले कि मुझे यहाँ नहीं जाना है, तो आप नहीं जाएंगे। मुझे नहीं पानी पीना, आप नहीं पिएंगे। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट सी द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज so wonderful, right? Again, Capricorns, like the Lovers card is there because you have realized what true love is. You've realized the light, you know, you've realized the true purpose, the true meaning. This pandemic has also taught you so much. You will be making choices. So the month of November is bringing love. The month of November is bringing insight. The month of November is bringing you hope, right? The month of November will make you see things beyond what money can buy, right? ठीक है, पहले आप जैसे कोई चीज़ आप लेने जा रहे हैं, लेट्स से आप भगवान का आइडल लेने जा रहे हैं, तो आप ये सोचते थे मैं मतलब जो सबसे महंगा होगा मैं वो खरीदूंगा या खरीदूंगी, लेकिन अब आप सोचोगे जो मुझे सबसे सुंदर लगेगा मैं वो लूँगा या मैं वो लूँगी, यू नो, चाहे वो प्रतिमा इतनी बड़ी क्यों ना हो, इतनी बड़ी क्यों ना हो। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। कोई एक वुमेन है आपकी लाइफ में, आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसके स्टार्स आपके लिए बहुत फेवरेबल हो रहे हैं, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी really you know, very, very lucky and fortunate for you. So have great times, dear Capricorns. Hey Aquarians, how are you? And now the predictions for Aquarians November 2020. Let me shuffle this pack as well. Yeah, dear Aquarians, let's check out what your cards say, dear Aquarians. Yes. Okay, I'll take out one card from here for you, dear Aquarians. It's one. This is two. Okay. And let me shuffle this one for you, dear Aquarians. What your cards say. All right. All right. All right. All right. Okay. That's one card here. Wow, that's beautiful. Now, as far as your guiding card says, guiding card ये कहता है हर चीज़ करने का जिम्मा अपने ऊपर मत लीजिए,
पार्टिसिपेट करिए और लोगों से पार्टिसिपेट करवाइए। जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, जो भी काम आपके हाथ में, यू कैन ऑलवेज टेक एडवाइस, यू कैन वर्क टुगेदर, यू कैन फॉर्म अ ग्रुप एंड देन go on. That's what it is being predicted for the month of November as a guiding light. Okay, and this is so true because the other card is also coming with the Seven of Pentacles कि आप अकेले खड़े हैं और अब आप सोच रहे हैं अब मैं क्या करूं, what should I do now, right? तो अकेले मैंने इतना कुछ तो कर लिया, but now what next? That's what you are talking to yourself. So I think you need not be frustrated about it. अब आप सोच रहे इतना सब कुछ मैंने कर लिया, अब what next? So ठीक है, you have to sow the new seeds. आपको पार्टिसिपेशन मिलेगा, एक आप टीम अपनी बनाएंगे, नया वर्क है, नया प्रोजेक्ट है. I believe some opportunities coming your way very beautifully because you have drawn the wheel of fortune. It's number 10, number 1, which is making a victory number for you. अब delays खत्म है, जो आपने इंतज़ार इतना किया है. एक sudden unexpected good luck आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, गुड हेल्थ आ रहा है, पैसा आ रहा है, फ्लावर्स आ रहे हैं, एक न्यू कार, ट्रैवल, एडवेंचर, कुछ भी हो सकता है डियर एक्वेरियंस. सो दिवाली इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट नाइस वंडरफुल टाइम फॉर यू टू जस्ट एंजॉय योरसेल्फ एंड हैव ग्रेट टाइम्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सन साइन, दैट इज डियर Pisces. Let's check out what your card says, dear Pisces. Yeah? Hey, dear Pisces. Okay. The last of all the zodiacs. My wonderful Pisces, right? Let's check out what your cards say, dear Pisces. Just shuffle the cards for you. All right. And then the nature cards, right? Dear Pisceans, let's check out what your card says, dear Pisceans. Yes. All right. That's one card for you, dear Pisces. Wow, that's so beautiful. Okay. All right. Well, your guidance comes as trust. You trust God, you trust yourself, you trust your instincts, you trust the good vibes. ज़िंदगी में दो तरीके के लोग होते हैं. एक हैं जो आपके साथ हैं, लेकिन लेट्स से वो आपके वेल विशर नहीं हैं. कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर हैं, लेकिन वो आपकी हर खुशी में कहीं ना कहीं हिडन वे में शामिल हैं. वो ट्रस्ट आपको रखना है. गॉड इज़ विद यू. योर गुड इंसाइट एंड इंस्टिंक्ट विल ऑलवेज गाइड यू. आपका जो एक प्रेडिक्शन का कार्ड आया है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, आई बिलीव you have become, this is predicting maybe because of the pressures or something, because of the king of swords. You're thinking too much about the work, you're thinking too much about making money, you are becoming little cold and abrasive. Maybe there is somebody in your life who is demanding a lot from you, that you know your situation better. But I would just suggest that Pisces, your main trait, आपकी जो ज़िंदगी की trait है, वो एक real self है, एक emotional self है, एक genuine self है most of the times. So don't get carried away by the rudeness or by the cold behavior of others. Just be yourself, because कहीं ना कहीं आप भी dominating हो रहे हैं, rude हो रहे हैं, you are becoming calculative. So which actually I think that the month of November, it's predicting that. But because the nature card has brought in that this can be a momentary phase. कोई भी नेगेटिव चीज़ वो उतनी ही लंबी हो सकती है या होती है जब तक हम उसको तवज्जो देते हैं, राइट? द मोमेंट यू किक, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्कैर्ड. अब ये डर हम 4 घंटे चाहें तो भी हो सकता है, 24 घंटे चाहें तो भी बढ़ सकता है. बट इफ आई किक इट राइट अवे, इट्स गॉन. सो इट्स जस्ट लाइक दैट, बिकॉज अगेन यू हैव गॉट द कार्ड ऑफ बीइंग romantic, dreamy, captivating, you're a little dramatic also. So you might fall in love with a project or an idea suddenly. कुछ ऐसा होगा that you're being swept off your feet. तो आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना है, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू आप नवंबर में गुजर सकते हैं. दैट ऑल वुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव. सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन. विश यू ऑल वन मोर टाइम वेरी हैप्पी नवरात्रि, वंडरफुल दशहरा एंड लवली दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. और चिराग, दीपक, दिए रोशन हो हमारे दिल में, खुशी के, प्रेम के, शांति के. हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, वो ऑटोमेटिकली हमें हमारे गम से हील करेगा. बी द लाइट, स्प्रेड द लाइट. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. जय माता दी एंड जय सिया राम.